इट्स एमयूएन टाइम। सो मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि कोई एमयूएन अटेंड करूँ। मैं काफ़ी टाइम से एमयूएन अटेंड करना चाह रहा था बट कोई मौका नहीं मिला था। पहली वजह तो कोविड थी, कोविड की वजह से काफ़ी एमयूएन्स कैंसिल हो गए थे। सो फाइनली इसका मुझे मौका मिला, इम्पैक्ट इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो आज 3 सितंबर को ये यहाँ पे इस्लामाबाद में है। इसका होटल का नाम मुझे फिर भूल जाता है। खैर इधर हम लोग 3 दिन स्टे करेंगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। एक्चुअली मुझे खुद कुछ पता नहीं है कि एमयूएन में कैसे चीज़ें होती है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। सो स्टे विथ मी। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. So रजिस्ट्रेशन मेरा हुई है अभी बाहर, तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी ओपनिंग सेरेमनी होगी और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो दी जाएंगी एमयूएन के बारे में, stuff like that. डन विद द ओरिएंटेशन एंड ओपनिंग सेरेमनी। अब हम लोग सारे यहाँ पर लॉबी में खड़े हुए हैं, और उसके बाद कोई सेशन वगैरह स्टार्ट होगा तो उसके रिलेटेड जो भी होगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मसला बन गया कि आई आस्क्ड देम फॉर अकोमोडेशन एंड मैंने अकोमोडेशन के लिए पे भी किया था, एंड नाउ दे आर सेइंग कि अकोमोडेशन नहीं है। आई एम प्रीटी फ्रीक्ड आउट अबाउट दिस थिंग कि मैंने पे भी किया एंड दे सेड कि that includes accommodation, transportation and stuff, but now they are saying कि आपकी accommodation नहीं है क्योंकि आप रावलपिंडी से हैं, तो it's not okay for me. So अब मैं देखता हूँ कि इसके बाद मुझे क्या करना है। Subscribe to Bilal's channel. So I am in UNSC and this is IIMUN, International MUN, and I have Pakistan as my country, and Bilal has Australia. Yeah. And we'll give a tough fight to him. Okay. So my name is Abdullah Lakhani. I am from secondary school. I am in first year. I am in community Stockholm, and my country is South Korea. Topic is combating culture terrorism. So what's your committee? What's your committee? Stockholm. Can you tell a little bit about your committee? What's the agenda? For now, the topic is combating the culture terrorism. Also, first, Stockholm focuses on the humanitarian sides, the racial discrimination, and all things. My committee is YC, and I'm representing UAE, United Arab Emirates. Hello, fellow Emiratis, wallahi. Alright, then inshallah we will see you around. I guess I don't know.
let's see, no shit about that. I'm going to see how it is. Okay. भाई आज का दिन हो गया ख़त्म। यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं, ओरिएंटेशन थी, ट्रेनिंग सेशंस थे और यस, तो मुझे अकोमोडेशन मिल गई थी लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि होटल्स की बहुत हालत ख़राब है और यहाँ पे खाना वगैरह भी कुछ ख़ास नहीं है। तो मैंने कहा लेट्स गो होम क्योंकि होम इज़ लाइक 30 मिनट्स अवे। तो मैं घर चला जाता और मैंने कहा कि मैं हमज़ा को अपने रिफ़ंड की जगह MUN करवा देता हूँ। सो कल हमज़ा होगा साथ, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, सुपर टायर्ड। सी यू गाइस टुमारो। ओके, सो दैट टुमारो नेवर केम। इट्स लाइक नवंबर और वो काफ़ी टाइम पहले था, सितंबर में था। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था, बट ड्यू टू एग्ज़ाम्स एंड स्टफ मैं वीडियो मज़ीद एडिट नहीं कर पाया। इतनी एडिट की थी और आगे मैंने ये जो नोट अपनी तरह से बोल रहा था, आई कुडंट, एग्ज़ाम्स की वजह से और काफ़ी सारी और चीज़ें हुई थी तो फिर से मैं ये नहीं कर पाया। इट वॉज पेंडिंग बट आई स्टिल वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज आई फेल्ट इट, क्योंकि द टॉपिक के वाई MUN सक्स फॉर मी या कोई ज़्यादा फ्रेंड हो जाना, लोगों को MUNs बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मुझे भी लगा था कि इट विल बी फ़न लेकिन इट वॉज़न्ट दैट फ़न जितना मैंने सोचा था। शायद मेरे कोई दोस्त साथ ही था, दूसरे दिन हमज़ा ने आना था बट एक्चुअली ये हुआ था कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था सैटरडे संडे को, बिल्कुल लॉकडाउन तो कैंसिल हो गया था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ बट द थिंग आई रियलाइज के इट वाज लाइक इट्स पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो मुझे पॉलिटिक्स नहीं पसंद और मैं पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकता एंड आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज इट्स नॉट माई थिंग। मैं ये सोचा था कि अगर इसके लिए कुछ साइंस फेयर होता, कुछ STEM कॉन्फ्रेंस होती तो I would stand out, but this is MUN, like it's not my thing. So maybe शायद next time मैं कभी ना जाऊँ MUNs पे. So yeah, the reason they suck for me. So thank you so much for watching. Allah Hafiz, peace.